I'm Gaurav Mashruwala, practicing financial planner. I'm also a columnist and author. I have been coming to Kaivalyadhama for 17 years, and for various well-being of myself and my cancer treatment. I found that out in year 2008. There was a ulcer in my mouth, and those were the days when my mother was going through a cancer, and she was on her last days. So my doctor told me, why don't you go to ENT? And then he did a biopsy. And then when the report came in, it was positive. So I was detected with cancer first time on 2nd June 2008. Actually, I don't know, I was fine. There weren't any challenges. Because on 2nd June, I was diagnosed with cancer. By 4th June, I was operated. Cancer was out of my body. And almost every time that has happened, by the time I realize it's cancer and get into grief, God does something whereby cancer is out. So God tells me, कैंसर था निकाल दिया, अब तुझे रोना है तो रो, लेकिन कैंसर से तो तू बाहर है. Radiation का टाइम थोड़ा चैलेंजिंग था. I have no idea what kept me going, but I have been going. I firmly believe that God has done that, because it never looked to me as if it was challenging. मतलब मैं इतना सोचता ही नहीं था. जो दिया है वो ट्रीटमेंट करने की है. And this is true with all the cancer patients. कैंसर पता चले, ट्रीटमेंट हो, सर्जरी हो, तब तक तो यू आर कंटिन्यूअसली इन स्टेट ऑफ मोशन. ये हो जाने के बाद में डर आता है कि अभी कुछ हुआ तो दर्द, दुख, चैलेंजेस बाद में माइंड में आते हैं. कैंसर में वक्त कुछ होता ही नहीं है. ट्रीटमेंट कराओ, सर्जरी कराओ, यू आउट. For my cancer, I have undergone 7 surgeries. 5 were malignant, 2 turned out to be benign. So totally 7 surgeries only for cancer. Oh, they were brilliant. They were really loving, caring. They never made me realize that I had cancer. And one thing I was very clear, I never cried in front of them. A king can't cry, a patient can't cry. If patient breaks down, family will break down. So I never broke down. Only thing I did was, I actually wrote down my strategy on a piece of paper. How will I deal with cancer physically? Who are the doctors whom I should be consulting? How will I deal with it socially? किसको मिलना, नहीं मिलना? How will I deal with it financially? And how will I deal with it spiritually? I had that paper and my strategy with me up to about 7 years ago. 10 साल हो गए तो मैंने उसको फेंक दिया. I said, अब भगवान संभालेगा. I give a lot of work to God. I feel he is lazy. Give him some work, तो वो हमें आराम से सोने देगा. वो काम करता नहीं, मुझे काम करवाता है. Yes, my daughter, she was 6 years old. Now she is 23. So there was little concern, not even worry. But I said she must have come with her own life. So वो डर कैंसर के बारे में था ही नहीं, क्योंकि मैंने कैंसर को एक बड़े रोग की तरह लिया ही नहीं. And this is thanks to Kaivalyadhama. 2008 I was diagnosed. 2008 end. There was second primary, I had to undergo radiation. One thing I was clear, I want to meditate. And at that point of time, I attended Professor Bogle's workshop, October 2009.
and I learned Kriya Yoga. And after that, all the emotions about cancer weakened, virtually nullified. I'm not positive, neither I'm negative. There's a stage beyond that. And that, because I keep reading scriptures and I'm a student of Sanatana Dharma from Oxford. In Gita, there's a saying, go beyond gunas. And to this, in a simplified form, I wasn't positive, I wasn't negative. I transcended that. And I surrendered to God. I said, whatever God does is best for me. And the moment that happened, there was no fear. There was complete faith in God. And now, all my life, I live that way. Because why should I worry? To put it a little curtly, I have no idea whether after 15 minutes or half an hour I'll have to go to washroom or not. Why am I planning for something 1 year, 2 years, 10 years down the line? God does best. There is one way I can look at why cancer, why me. I can always say, कैंसर के बाद 17 साल जिंदा क्यों रखा? जिंदा रखा तो मैं नहीं पूछता हूँ why me. हुआ तो why me. When I get so much of TV shows, writing, column, wealth and love and affection, I don't ask God, why me? तो यहाँ पर भी why me? Leave it to him. उनको भी काम करने दो. I have no idea. I don't address. एक cough and cold होता है, वैसे कैंसर होता है. वो गया, ये भी गया. अभी मैं सोचते ही रहूँगा, अरे जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया. बाहर नहीं जाओ, अंदर मत जाओ, ये मत खाओ. जुकाम नहीं होते हुए भी मैं जुकाम के पेशेंट की तरह जीऊँगा. तो वही कैंसर में है. डरो मत. You be diligent, be obedient. If your oncologist calls you every 3 months, 6 months, don't ever miss that. But after that, leave it. My answer is Kaivalyadhama मत आना. यहाँ पे बहुत चोरी होती है. सबसे पहले इतने साल से आता हूँ, मेरा वेट चोरी हो जाता है. जो वेट लेके आता हूँ उससे वेट कम हो जाता है. ये वेट गायब कर देते हैं. आप ही सोचिए, मुंबई में मैं पकौड़े, पिज्जा, चीज खा के वेट बढ़ाता हूँ, ये लोग 1 वीक में गायब कर देते हैं. दूसरा, ये लोग गायब कर देते हैं स्ट्रेस. मुंबई में कितना स्ट्रेस होता है. व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फोन आया, कॉल बैक, ये वो, इतनी मेहनत करके स्ट्रेस करते हैं, 1 वीक में वो भी गायब. अभी ये सब, इसके बाद कैंसर, ये लोग ने कैंसर भी गायब कर दिया. अरे प्रॉब्लम है दोस्त, यहाँ पे जो आओगे कैंसर लेके आओगे वो भी गायब कर देंगे. मुझे है ना, थोड़े दिन पहले एक सपना आया था. वहाँ सपने में एक बूढ़े बुजुर्ग स्वर्ग में बैठे थे. उनके आसपास खाने की बड़ी चीजें थी, बड़े बड़े जूस, फल के रस वो थे, अप्सराएं थी, अच्छा सा महल बहल था. मुझे कहने लगे, बेटे कैवल्यधाम जा रहे हो? मैंने कहा हाँ. बेटे मत जाओ. मैंने कहा क्यों? देखिए मैं भी जाता था. मैं को फिर आप तो इतना स्वर्ग में हो. हाँ, इतना जिया थे वो लोग, इतनी मेहनत करते हैं. अभी इतना लंबा जिया, अभी यहाँ आके क्या करूँ? बूढ़ा हो गया हूँ, खा भी नहीं सकता. उससे अच्छा कैवल्यधाम मत जाओ, जल्दी मरोगे, जल्दी ऊपर आओगे. तय आपको करना. लंबा जीना है, बिना कैंसर जीना है, चैन की जिंदगी पृथ्वी पर चाहिए या मरना है. मरने के बाद गारंटी तो है नहीं स्वर्ग में जाओगे कि नरक में. गलती से नरक में चले गए, प्रॉब्लम हो जाएगा. तो चाहे कैवल्यधाम.